Okay, so I think we just went live on YouTube. Please bear with me, guys. I'm doing it for the first time. So we should see. Okay. Yeah, so I think we have now everyone. Okay. So I think we just went live. Let me put add spotlight. Okay. So Sai all. I think we are all set, right? There's a lot of things happening on my laptop right now. So I need to make sure everything's in edit. So I think, okay, let me start recording. Record on this computer. Okay, so I think we have been doing with Baba's Grace a lot of sessions, but I think starting this Saturday, Baba has taken us to a next level, because what we used to do is always we will call Baba's, the devotees who used to live with Baba and their descendants, and then we will hear from them and feel blessed, right? We will be very happy. I think what Baba has said, okay, enough of that. Now we have given you a treasure that you hear from those devotees directly. So, and I think this has all happened because I don't know, we will get to know more from our guest for this evening, Dr. Antonio, who has signed in from Italy. And I will let him speak. But what we have found is through one of your fellow devotees who hosted a session with Dr. Antonio Jayashri ji, and we have found actually the audio interviews that he did back in 1985, 20 plus years back, with some key devotees who were really matured at the time when Baba took Mahasamadhi, right? We are not talking of like if the devotees are 4 years old or 5 years, like Anna Sahib Gavankar ji, because you are too small to remember, but you do have a memory and you are blessed to be in the presence of Baba. But we are talking of several devotees who have been very 30 years, 20 years at the time of Baba's Mahdi, meaning 1918. And that happened just because of Dr. Antonio. And today, the speaker, what we are going to hear is from Balaji of Gurav, right? We have had this session before also, and we heard from Kaki, जो कि अभी शिरडी से हैं, और उनकी ग्रैंड डॉटर है साथ में बालिका. And then we also have our permanent member of this session, Dr. Ashutoshi Dikshit Foundation, se jo ki he will also touch upon some of the key issues. So without any ado, I will hand it over to Dr. Antonio. Dr. Antonio, very briefly, tell us about how this all happened, and then we will directly move into the audio interview. Great. Thanks a lot to everyone. Sai Ram to everybody. Sai Ram from Italy, from Venice. It all happened like this, that in the early 1980s, I was much into Indian religions, and I had to prepare for my BA thesis. And one of my professors suggested to me in 1982, 83, that I should focus on the greatest saint of India, that is Sai Baba. And so I, with great enthusiasm, I started reading and studying everything I could find on Shirdi Sai, basically in English and also in other languages. At the time, I was studying Hindi in university, but my knowledge of Hindi was very low. But still, I had the help of some Indian friends, especially the Hindi reader in my university, Mahesh Jaiswal, and also other Indian friends who helped me a lot, both in Italy and then when I decided to come to India, because
my professor advised me that in order to work on my thesis, I should do some field research in Shirdi and try to meet old villagers who might still be alive and tell me about the life and teachings of Sai Baba. And so I prepared very meticulously for this trip. I had arranged all possible questions I wanted to ask the people, although I didn't know anything really because I had never been to Shirdi before. But again, I was very much helped and blessed by some Indian friends, especially the Agrawal family from Bombay, who helped me a lot and also took me to Shirdi, and they were really instrumental for me in meeting the right people in Shirdi, in the Sansthan, and also find some good interpreters. So basically what I did, I was in Shirdi in October 85 during the Punyatiti celebrations. I was in Shirdi for about 15 days. And every day from morning till evening, I would go from house to house in Shirdi with a local interpreter that would translate for me from Marathi into English. And we would go visit these old people that knew Shirdi Sai. So I remember the first person I met was Uddhav Madhavrao Deshpande. And we had a beautiful conversation in his house. And we proceeded this way every day, trying to meet all possible people that might tell us about Shirdi Sai and that could narrate to us various episodes, Leelas, happenings, habits of Shirdi Sai, stories, or whatever they thought to be important. In fact, after all, what was most important was to hear their voices and hear what they wished to tell me that they thought would be important. So for me, it was a great blessing. And I found wonderful people. Everybody was very, very helpful in Shirdi, in the Sansthan, and all the old villagers I met, their families were all very helpful and very extremely nice to me. So I was really blessed. And I took these interviews on tapes back in 1985. And for many, many years, I had them in my desk. And finally, I decided that it was my duty to have these audios heard by everyone. And so I took pains to have them on CD-ROMs and then make a publication out of it, and also have these audio recordings for free so that anybody can listen to them. And so back in 2 years ago, even less, I was able to publish this book of my field research in Shirdi back in October 1985, which is titled Oral Testimonies on Sai Baba. And I was also able to publish these audio recordings so that everybody can listen to them and appreciate what these old villagers told me. So you have both the written version and the oral version of their voices that you can hear in these audios. One last thing I will say is that it is all for free in the sense that there is nothing to be paid for. I did it in a spirit of seva, of a selfless service, so that if there's anything good in these tapes, it is because of the grace of Shirdi Sai. And so, as you know, you can find both the book and these audio recordings on the net.
And so I'm happy if this will be useful and a blessing for all Sai devotees, as it has been for me. And so this is all really what I have to say. Yeah, no, I think this is great. Dr. Antonio, it's not useful. I think we are all blessed. I will tell you, I have not heard, I have just heard from descendants. This is the first time I am hearing actually the voice, although, the Leelas are the same, but, hearing the voice, it's a different divine feeling. So all devotees, what we are going to do is, the logistics is कि जो interview होगी उसमें there are 3 people. One definitely, one is Dr. Antonio, right? He will be asking questions in English, and then he had his interpreter Swami Shekhar Rao, right? Yes. Right, he will translate this English into Marathi, and he will ask questions to Balaji Gurav, और जो मराठी में आवाज आएगी और होगी वो बालाजी पिल्लव गुरव की होगी. I think why I thought, although this is available, we'll share all the links, everything in the end, but why I thought this is more important that we all hear it, for various reasons. First, I think we need to, it's not just listening, but it's need, we will get to hear from Dr. Ashutoshi, and I will relate some other incidents touching upon what Balaji Gurav is saying, so that we can get a complete picture. And also, it's, that's what satsang is, hearing from Guravji, and also we have his daughter over here. So with that, this recording is, we have put a pauses in between, बीच में हमने pause डाले हुए हैं जहां पर हमारे को we can relate to other incidents or some more information we want to share with the devotees what Balaji Pilaguru is. But before that, another thing, unka jo pura naam tha, full name was Balaji Pillav Gurav, right? His father's name was Pillav Gurav. So in this interview, the interpreter has used that word interchangeably, addressing him as Balaji or Pillaji Guru. So I just want to clarify, I don't want you guys to get confused, right? We are not talking about Pillavji Guru in this interview. It is all about Balaji Pillav Guru, and you will hear from him. He had a full 6 years association with Baba, right? And that also in his teen years, right? From 12 to 20 years or something like that, we'll hear from that. So that's how so there are 3 people in this interview. One is Dr. Antonio speaking in English, Swami Shekhar, he is the interpreter, he will translate, and the final is the Balaji Pilagura. So with that, I'm gonna start sharing this audio interview. Okay, please bear with me, guys. Balaji Pilaji Guru. I see. How many years old? आप कितना वय वाले हैं अभी? अभी 90. 90 years old. 90 years old. Novantan. हमारी उम्र 20 वर्ष की थी. 20 वर्ष की? हमारी उम्र 20 वर्ष की थी बाबा गए. अच्छा. When he was in 20 years of old, Baba takes samadhi. He was 20 years old. Sai Baba. बाबा 1968 से नहीं गए. 1968 से नहीं बाबा गए. उनको सेवक का स्नान डाले बाबा को. सेवक का स्नान डाले. अच्छा. कितने दिन नंतर? ताबड़तोब डाले. अच्छा अच्छा. तो वो लंगोटी और कौड़ छोड़ के रखा जो ना नवा पे ना, वो हमने किसका लक्षण से उठा के लाए भक्त लोग उनको बताते. अच्छा. So here he's saying, Balaji Gurav is saying that when he had association of 6 years, and then when Baba took Mahasamadhi, when he was given the last bath, he has that langot, and I think we have seen that langot. But Kaki, aap wo langot abhi hold on, I have to stop the share. But what we will do is, in the end, Kaki will share that langot with you. We have done that, and also the coin that he's talking in this audio interview. So I'll continue.
Baba has given some money, that is coin, to Dachina. Not Dachina, that is, for expensing. Yes, sir. Given to some coin to this Bala Gurav. Ask him if that's right. Yes, agreed. Ask him in his feelings, what is the most important teaching of Sai Baba? बाबाच्या वेळी तुम्हाला 20 वर्ष होतं ना त्यावेळी बाबा का हमारा 6 बरस सहवास 6 साल से तुम्हाला ज्यादा परिचय हो गए 6 बरस since 6 years means when he was in 20 no when he was in 14 he got a closely friend with Baba. When he was 14 years old, he became a close friend to Baba. Baba used to play with him. Friend means devotee. Devotee. 1912 साली हम यहाँ आए 12 साली हम शिरडी में आए तुमचे वडील संघात आले ना हाँ तो जब हमारी उम्र 14 वर्ष की थी अच्छा they came with his father. He came with his father to Shirdi in 1912. He came with his father in 1912 to Shirdi. Yes, that is when he was 14 years old. This Pila Gurav was 14 years old. What? Yes. बाबा का हमारे 6 वर्ष सहवास बाबा का हमने मारे खाया बाबा ने हमारे को मारा है 6 years. Baba used to do to him. अच्छा बाबा तुम्हाला काय काय करत होतो अजून पैसे देत होतो अजून दुसरं काय करत होतो बाबा की नौकरी कभी कभी चौकीदार होना कोई ऐसे सेवा करते चौघड़ा बनाना चौघड़ा बजाना वो हमारा काम था वडील क्या तुम्ही हमारे वडील सन्ने बजाते थे his father was singing music. His father तुमचे पिराजी और हम चौघड़ा बजाना this gentleman means Pila Gurav is also making some music like that. What is called tabla. Yes. And his father was music Shanai. That is called. Ask him if it is true that many times Baba got angry. बाबा ने हमने बाबा को मार खाया Sometimes beaten by Baba to this gentleman. Sometimes Baba beaten him. When he was young, no? When he was young, that time he was only young, only 20 years. So sometimes Baba beated him. Right. Ask him why did he beat him? क्यों आपको मारे थे? करने रखतो. Without any reason and cause. Baba was getting angry and for this youngsters he was beating. दिल्ली बाग में हम गए दिल्ली बाग में वो लोकल बोर्ड का झाड़ वो लोकल लोग तोड़ते थे तो बाबा मेरे को बोले एक गोरे तो पोरा कि चलो संग झाड़ तोड़ने को जो जीव है उसमें जीव है वो झाड़ तोड़ना नहीं जो संग. So here what Balaji Gurav is saying is that Baba told him that in Lendi Bagh your people are taking out the trees and that trees also have life, so you don't need to ask them not to bring down any trees, right? But what is more interesting is I think you guys should all focus on when Balaji Gurav is saying how Baba is addressing him. Baba said, Gurav ke bete, usko bol ki wahan pe pedon ko mat tode, right? And now you should focus on another thing. We know Baba's typical way of saying things to devotees, right? He will use curse or at times he's very rude. Now in the next section, you should see what Balaji Gurav says. हमने बोले बाबा वो झाड़ सरकारी है आपने वो कैसे माने कर जाएंगा फिर बोले तू देर भड़वे वाला से आंख में चिकी दो बस. Pilaji says to Baba, told to Baba, how we can say like that.
but tree belongs to go by the government. That was another one, I think. Belongs to others. How we can say? Baba, what told Baba? No, the trees are also having life. So you should not touch like this and not to pulp. Pulp means taking out. Ah, they were taking out. Yes. So Sai Baba was angry for this reason. Yes. They were taking away the life to the tree. Tell them not to take. I see. So, like I was saying, actually, if you focus, we all these audios, this is we'll share with you. It's on the site, and what are the edited audio I will share with you. Baba addressed him, Balaji Gurav, saying, "ए भड़वे, जब बालाजी ने उनको बोला कि वो तो सरकारी पेड़ हैं, मैं कैसे उनको मना कर सकता हूं?" तो बाबा ने कहा, भड़वे मुझे मत बोल, वहां कोने में आके खड़ा हो जा और उनको मना कर, राइट? So that is the thing, I when I heard this, it's really enjoyable, hearing how Baba used to say. Although, we heard that Baba Baba used to beat people, but those beatings were, blessings in disguise, right? So Dr. Ashutosh ji, why don't you talk about, we have heard many Baba used to beat many people. Actually, he's not beating that person, rather the bad things, or getting rid of bad qualities from that person. You're on mute, Ashutosh ji. Yes, we can hear you now. Right. So well said. In Shirdi, the Baba had a very peculiar behavior, not like I guess usual saints. जैसे आपको देख के लगता है कि बड़े बाबा शांत स्वभाव में बैठने वाले, ये बाबा का स्वभाव बड़ा बदलता रहता था. And nobody was knowing why Baba was getting angry. अब इस केस में जस्ट एक दो एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा. व्हाट गुरव जी हैज टोल्ड यू दैट Baba was beating people without any reason. In his statement, he has accepted it, he has narrated it. And मैं आपको शिरडी साईं सचरित्र से, जो शिरडी की कथाएं हैं साईं सचरित्र में उद्धृत हैं, उनसे दो कथाओं को बताता हूं, जिससे आपको लगेगा कि जी बाबा सचमुच सबको बिना कारण के, हमें लगता है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं था कि बिना कारण के कुछ होता है. कारण तो सब होता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते. सो इसलिए इन चीजों को हम दो बाबा की लीलाओं से समझने का प्रयास करते हैं. एक तो लीला का पहले की है, जब मस्जिद का जीर्णोद्धार हो रहा था, जब मस्जिद वाज गेटिंग रिपेयर्ड, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे थे मस्जिद को. सो उस समय क्या था कि खंबे बल्लियां सब गाड़ रहे थे और लगा के, और उधर से बाबा लेंडी बाग से जब लौट रहे थे तो उनको अचानक गुस्सा आ गया. एक हाथ से उन्होंने फटाफट वो उनकी जो बल्लियां लगी थी, जो पिलर्स लगे थे, वो उनको उठा के निकाल के फेंकना. नाउ यू कैन इमेजिन, जिन पिलर्स को द राजगीर हैज फिक्स्ड अप विद द सीमेंट एंड एनी अदर मटेरियल, बाबा उसको एक हाथ से उखाड़ कर फेंक रहे थे. और उसको फेंकने के बाद उसी समय बाबा के सामने तात्या पड़ गया, और तात्या का बाबा ने फेटा जो सर पे बांध के रखते हैं, तात्या का फेटा उतारा और उतार के वो भी फेंक दिया गड्ढे में. और गड्ढे में फेंकने के बाद तात्या को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया. बाकी सारे लोग तो भाग खड़े हुए बहुत दूर चले गए. प्रयास किया इन्होंने, जो बाबा के सेवक हुआ करते थे भग्गोजी सिंधे जब बाबा के पास जाने का कोशिश किए कि शायद रात दिन भग्गोजी बाबा की सेवा करते हैं, बाबा शायद इनको छोड़ दें, लेकिन बाबा ने इनको भी धक्का दे दिया, धक्का मार के गिरा दिया. अब यहाँ देखने की चीज ये थी कि बाबा को आखिर ये क्रोध आया क्यों? क्योंकि जो मस्जिद का जीर्णोद्धार हो रहा था, जो रिनोवेशन हो रहा था मस्जिद द्वारिका माई का, दैट वाज विद द कंसेंट ऑफ साईं बाबा. बाबा ने पहले कंसेंट दिया था, लेकिन अचानक गुस्सा हो गए, अचानक सब उखाड़ कर फेंकने लगे.
एक रीजन कई जगह मुझे मिला इसमें कि बाबा ने जब बल्लियां उखाड़ी उसमें उन्होंने इसका साफा डाल दिया और उसके बाद उसमें कुछ पैसे भी डाले, तो ये कहते हैं कि कुछ वास्तु का काम बाबा ने करके इसको वास्तु को फिट करने का, कि इस जगह पे कोई और बुराई ना रहे, जितनी भी व्यवधान आने वाली थी, प्रॉब्लम्स आने वाली थी, उनको दूर करने का बाबा का यह एक अलग तरीका था। इसीलिए कभी कभी जब पर्सनली बाबा डांटते थे तो लोगों को समझ में नहीं आता था कि बाबा आखिर डांट किस लिए रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये होती थी कि आपके ऊपर आने वाली समस्याएं या आप जिन समस्याओं से घिरे हैं, बाबा उससे आपको निजात दिलाते थे, उससे दूर करते थे। बाबा आपको नहीं बल्कि उन समस्याओं को डांटते थे जिसकी वजह से आप परेशान हो। तो ये एक घटना थी। और दूसरी घटना, सच्चिदानंद साईनाथ सबको पता है कि 1918 में महासमाधि लिए थे दशहरा के दिन। उस दशहरे से ठीक 2 साल पहले वाले दशहरे पे जब सच्चिदानंद साईनाथ तो ने यह एक इंडिकेशन दिया था कि दशहरे के दिन मैं जा सकता हूं, मैं महासमाधि ले सकता हूं। सो दशहरा जैसे हम लोग सब मनाते हैं, उस दिन भी शिरडी में दशहरा मनाया जा रहा था। ये दशहरा अक्टूबर 1916 की थी, 1916 का विजयदशमी फेस्टिवल था। तो जब लोग गांव पे प्रोसेशन के रूप में गांव के बाउंड्री तक जाते थे और वहां से फिर आतिशबाजी कुछ करके फिर वापस आते थे, एवरीथिंग वाज मूविंग वेरी क्वाइटली एज पर प्लान। सब लोग एंजॉय कर रहे थे, इवन बाबा वाज आल्सो एंजॉयिंग। लेकिन जब वापस आए बाबा, सो व्हेन ही केम बैक टू द्वारिका माई, और आने के बाद बाबा अचानक गुस्से में हो गए। फिर जो सामने मिले उसको तोड़ना, उसको मारना। इवन इस भीड़ में भग्गो जी शिंदे जब गए पास में, तो बाबा ने उनको पहले धक्के निकाल दिया, फिर बाबा ने अपने सारे कपड़े उतार कर फेंक दिए। और उस क्रोध में बाबा एक ही चीज चिल्ला रहे थे कि आकर मुझे देख लो कि मैं हिंदू हूं या मुस्लिम। क्योंकि यह प्रश्न लोगों के मन में उठता रहता था। तो बाबा एक चीज तो ये कि लोगों के मन से इस भेद को मिटाने का प्रयास किए कि ईश्वर के बारे में उसको 2 खंड में बांटना या ईश्वर को कई धर्मों में बांटना उचित नहीं है। तो वहां कर देख लो कि मैं हिंदू हूं या मुस्लिम हूं। और दूसरी चीज, फिर अचानक बाबा थोड़ी देर के बाद शांत हो जाते थे। ये बाबा की प्रकृति थी। और इस प्रकृति को धीरे धीरे शिरडी में रहने वाले सब लोग समझ गए थे। मुझे तो जहां तक पता है कि जितने भी बाबा के ग्रेट डिवोटीज थे वो सब पिटे हैं बाबा के हाथ से, सिर्फ काका साहेब दीक्षित को छोड़कर। द ओनली वन पर्सन हु वाज नॉट बिटेन बाय बाबा इज काका साहेब दीक्षित। सो बाबा अनायास नहीं पीटते थे। बाबा आपके ऊपर आने वाली विपत्तियों को पीटते थे, आपदाओं को पीटते थे। आपके जो नुकसान करने के लिए शक्तियां काम करती हैं उनको पीटते थे। ऐसा हम लोगों का मानना है। Great. So now we are going to go back to the listen from Balaji Gurav. Now he is going to talk us about Leela that I never heard about, that he is narrating about what happened during Ram Navami Utsav. अभी बाबा का अनुभव, रामनवमी की यात्रा आई, उत्सव, दुष्काळ पड़ा पानी का, पानी का दुष्काळ पड़ा, पानी पीने को नहीं। गांव के लोग गए बाबा के इधर, बाबा कल अपनी रामनवमी की यात्रा उत्सव है, भक्त लोग आएंगे पानी पीने को नहीं। बाबा बोले अरे बहुत पानी। बाबा ने क्या किया, 2 रोटी जौहर की दाल ऊपर पिठला रखा और कुएं में छोड़ जा। बहुत पानी आकर सब यात्रा पार पड़ दिया। रोटी लाया उन्हें बना के, हाँ उसने पिछले रखा, वो कुएं में छोड़ दिया। बहुत पानी आकर सब यात्रा पार पड़। At the time of Ram Navami festival, the water scarcity happened here. Scarcity means no water, nothing. What to do for water? So lot of people are coming to Shirdi in the Ram Navami festival. Thousands of people are coming. And what about the water? Where we will go? Like this, these villagers were thinking. And they went to Baba and told to Baba what to do for water. Thousands of people are coming here.
Then then what Baba made, Baba got some bread made by Jawari. It is called Jawari, one flour, just like wheat. Pour in the well. Put the bread in the well. Yes, there was no water in the well. And after pour the Jawari bread in the well, well got a lot of water. Then they supplied from the same well to the A miracle of Swami. Yes, yes, this is the main point of miracle. Ask him about the teachings of Sai Baba. If from 14 to 12 years, when he was with Baba, Baba gave him some teachings. जैसे जो जिसको देव को मानते भगत उसको उपदेश करना है। तुम अपने अपने जो देव है तुमने तुम्हारे उनको जो उपासना करना ऐसे बोल देता। So Dr. Ashutoshji, why don't you talk about this? Look, the thing is, we can hear about Leelas, but more the main important point is like what Dr. Anthony asked him is what is actually Baba's teaching, right? Basically, on this specific topic, thus Baba asked him to just go. Why don't you go to your guru? It can be seen that all gurus are same. So Baba never preached his philosophy, never superimposed his philosophy on any guru's philosophy, and never asked the devotees of some other gurus to join Baba. Baba का दरबार खुला था। वो कहते थे कि तुम चाहे जहां से इच्छा हो, जैसे हो, उस तरह से आओ, शिरडी में रहो, एंजॉय करो, हमारे साथ बैठो, खेलो, लेकिन ध्यान रखो कि तुम जिस खूटे से, जिस गुरु के साथ जुड़े हुए, जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हो, उसको कभी मत छोड़ना। ये जो बाबा का ट्रस्ट वाला बिहेवियर, श्रद्धा थी कि जिस गुरु के साथ, बाबा को तो ये पता था कि सब गुरु में एक ही गुरु शक्ति है, वो सब ईश्वर के अंश हैं। सब गुरु को जो इवॉल्व सोल है, गुरु के रूप में यहाँ आई है, और इसलिए बाबा कहते थे कि तुम अपने गुरु के पास ही रहो। एक घटना बताता हूं मैं साईं सचरित्र से इस बारे में। एक डिवोटी थे पंत जी, ये किसी और गुरु के डिवोटी थे अपने, लेकिन इनके साथ हुआ क्या कि ये जब ट्रेन में सफर कर रहे थे तो लोग चर्चाएं करते थे उस समय पे, दे वर टॉकिंग अबाउट द साईं बाबा। सो इनको भी मन में ये हुई कि चलो क्यों नहीं साईं बाबा के दर्शन करते हैं, एंड मोर ओवर दे रिक्वेस्टेड आल्सो कि चलो मेरे साथ चलो, तुम देख लो शिरडी में जब जाओगे तो यू विल एंजॉय एंड यू विल फाइंड दैट व्हाट टाइप ऑफ गुरु इज साईं बाबा। सो ये भी शिरडी चले गए, अपनी सारी व्यवस्थाएं, ये लॉन्ग स्टोरी में स्टार्ट पे सुना रहा हूँ। सो ये शिरडी जब जाते हैं और बाबा के द्वारका माई में जब भीड़ जुटती है, उसमें ये भी शामिल हो जाते हैं, बाबा की आरती चल रही है और सब लोग बाबा में मग्न हैं, बाबा का नाम ध्यान कर रहे हैं। अचानक देखा गया कि पंत जी बेहोश होकर गिर गए। अब इनके दोस्तों की तो हालत खराब होगी कि क्यों बेहोश हो गया, यहाँ पे बड़ी मुश्किल हो गई। लोग पानी वो नहीं ले आए और बाबा से प्रार्थना करने लगे। क्योंकि द्वारका माई की बात है तो द्वारका माई में हर आदमी बाबा के सामने ही गिड़गिड़ाना शुरू करता है। तो बाबा ने कहा इसके सिर में, चेहरे पे थोड़ा पानी मारो। पानी वो नहीं मारा, ये होश में आए, उठकर बैठ गए। तो बाबा ने उनसे एक ही कहा कि जिस खूंटे से जुड़े हो उससे जुड़े रहना। ये चीज किसी और के समझ में तो नहीं आई, लेकिन पंत जी को समझ में आ गई कि मैं एक दूसरे गुरु का शिष्य हूं। मुझे अपनी श्रद्धा और अपना विश्वास अपने गुरु में रखें, क्योंकि बाबा एक ऐसी शख्सियत से कि यदि आप उनको अपने गुरु की तरह पूजा करेंगे तो ही विल अलाउ यू टू वर्शिप हिम एज योर ओन गुरु। ऐसी कई घटनाएं साईं सचरित्र में लिखी हुई हैं कि जब लोग बाबा को अपने गुरु के स्वरूप में देखे और उनकी आराधना पूजन करने लगे। सो ये बाबा की एक बहुत बड़ी लोगों से सीख थी कि सब लोग एक साथ हैं, सारे गुरु एक हैं और सब गुरुओं की एक ही शक्ति है, गुरु शक्ति सब में काम करती है। इसलिए अपना श्रद्धा, जो अपना कॉन्फिडेंस है, जो अपना बिलीव है, जो अपना फेथ है, कीप इन योर ओन गुरु ओनली। चाहे बाकी आप कहीं जाते रहो, कुछ भी करते रहो। तो दिस वाज द इम्पोर्टेंट टीचिंग ऑफ साई बाबा व्हिच गुरव जी वाज टॉकिंग अबाउट। Right. Okay, we'll continue.
Why he thinks that Sai Baba always spoke Muslim phrases like Allah Malik, Allah Malik. Ask him why. Or, for example, he said to God like Fakir. This Fakir like this God. You see. Why he used to speak Muslim and not Hindus words? Why? Stop it. तो भगवान के नाम भी घेतो रामाचे नाव घेतो फकीर लोक आले तर त्यांच्या संघात पण मिळत त्यांची चोरी हे करते. When the fakirs are coming, fakir means belongs to Mohammedan, are coming to Shirdi to meet Baba. Baba used to go with them and taking food, what they like they were doing, and always saying Allah Malik, God is one. Allah Malik and God is one means Sabka Ek Malik. Yes. Allah Malik and God is one. Like that he was telling with his one finger. And also using Rama, Krishna, Shiva and this and that. He used even to say Rama, Krishna, Shiva. Both. Both very. I see. So, Dr. Well, Ashutoshi, yeah. Yes. I'll explain this. Baba always used to say this, Allah Malik, Allah bhala karega. From the Shastra, Ved, Puran, जो हिंदू रिचुअल्स में स्क्रिप्चर्स हैं, उनसे एक चीज बड़ी क्लियर है कि ईश्वर एक है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जिसे हम परब्रह्म के नाम से जानते हैं। इस परब्रह्म से तीन उत्पत्तियां होती हैं। वो उत्पत्ति होती है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये तीन शक्तियां उत्पन्न होती हैं। इनको रादर आप शक्तियां कहिए कि तीन शक्तियां उत्पन्न होती हैं परब्रह्म से। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। एक क्रिएटर है, दूसरा सस्टेनर है और तीसरा डिस्ट्रॉयर है। ये सृष्टि पूरी नश्वर है, नासवान है। यहाँ पे whatever things you are seeing is going to get destroyed one day. It's sure. So इसीलिए शास्त्र में कहा है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इसका मतलब ये हुआ कि everything other than ब्रह्म is an illusion. Everything will die. Everything. The only truth is God, ब्रह्म, परब्रह्म जिसे हम कहते हैं। तो उसी परब्रह्म के विभिन्न स्वरूप में अवतार आते हैं। उस परब्रह्म की कुछ शक्तियां लेकर के, उसके अंश को लेकर के अवतार आते हैं। और हर अवतार, चाहे जो कोई भी इनकारनेट होता है, he has a defined role to perform in his incarnation. So therefore, बाबा के समय भी जब अवतार लेकर बाबा आए थे, तो उसी परब्रह्म के अंश के स्वरूप गुरु शक्ति सच्चिदानंद साईनाथ जब अवतरित होते हैं, तो सच्चिदानंद साई के पास भी अपना एक अवतार कार्य था। आप उस समय को देखें जिस समय सच्चिदानंद साईनाथ का अवतरण शिरडी में हुआ था। उस समय में ऐसा था, मुगल साम्राज्य खत्म हो रहा था, अंग्रेजों का साम्राज्य आ रहा था, अंग्रेजी साम्राज्य था। तो उस समय उर्दू खत्म हो रही थी, सल्तनत खत्म हो रहे थे, अंग्रेजी बढ़ रही थी, और ये आपस में जो समाज में विभेदता आ गई थी, सब एक दूसरे से लड़ना शुरू किए थे धर्म के नाम पे। इसलिए बाबा इस स्वरूप में आए। ना हिंदू दिखते थे, ना मुस्लिम दिखते थे। तो इसलिए बाबा ने ये स्वरूप उनको एक करने के लिए, ताकि समाज में सद्भाव बना रहे। और अभी हम ऐसी चीज को जब हम लोग टॉक कर रहे हैं, नाउ टॉकिंग अबाउट द अल्लाह मालिक, गॉड इज वन। सो नॉट ओनली हिंदू स्क्रिप्चर, आप कहीं भी देखो, जितनी भी बड़ी धर्म हैं, वो सब कहती हैं कि गॉड इज वन ओनली। जैसे लाइक हमने हिंदी में कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी एक ब्रह्म के अलावा सब मिथ्या है, सब इल्यूजन है। वैसे ही इस्लाम में कहते हैं, जब आपने देखा होगा, वो जब प्रेयर करते हैं तो कहते हैं ला इलाही इल्लल्लाह। इसका मतलब क्या हुआ? ला इलाही इल्लल्लाह, इसका मतलब सिंपल यही है, देयर इज नथिंग अदर देन अल्लाह। ये भी वही बात करती है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। यहाँ पर कहते हैं ला इलाही इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा कुछ नहीं है। एंड वेद में चलिए, यदि वेद क्या कहता है
एक सत्र विप्र बहुधा बदानी, एकम सत्य विप्र बहुधा बदानी, यानी देर इज वन ट्रुथ इंटेलिजेंस पीपुल ऑलवेज से। यहाँ पे विप्र को ब्राह्मण से मत समझिएगा, ब्राह्मण का मैं अर्थ लगाता हूं, जो कहता हूं वो जाति से नहीं, जानेति ब्रह्म इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जाने, जो ब्रह्म के मर्म को समझ सके, उसको ब्राह्मण कहते हैं। ही हु नोज द ब्रह्म इज अ ब्राह्मण। सो यहाँ पे विप्र कहते हैं उसको, कि हम इसको लेते हैं कि इंटेलिजेंट पीपुल। सो इंटेलिजेंट पीपुल ऑलवेज से कि ट्रुथ इज वन। सो इसलिए बाबा भी इसी परिपाटी को, चूंकि बाबा भी परब्रह्म परमेश्वर की उसी सत्ता से अवतरित हुए थे, और ये इस बारे में हम लोग कभी परिचर्चा में भाग लें कि जिसमें गुरुज कैसे बनते हैं। योर ओन सोल कैन बी इवॉल्व्ड एज द सोल लाइक अ गुरु। सो इससे टाइम टेस्टेड एंड टाइम कंज्यूमिंग फेनामेना टू इवॉल्व योरसेल्फ एज ए गुरु। सो अपने आत्मा को अपनी परिमार्जित करते हैं, परिष्कृत करते हैं धीरे धीरे गुरु के स्वरूप में आने के लिए। तो सब सिस्टम एनर्जी बेस्ड है। जो सुप्रीम एनर्जी इज वन, दैट इज परम ब्रह्म, एंड परम ब्रह्म, इसीलिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ऑलवेज यूज्ड टू से कि धार्मिक विवाद में ना पड़ो, अलग अलग मत लड़ो, क्योंकि मालिक तो सिर्फ एक है, वह सुप्रीम अथॉरिटी एक है, गॉड इज वन। उसको जिस नाम से बुलाना हो बुला लो। और एक जगह है इसको yeah, so next what we are going to do is we all are curious, right? We always learn what was Baba's daily routine, right? And there has been a lot of incidents regarding Lendi Bagh, right? So that's what we are going to hear next from Balaji Gurav. Ask him what Baba did during the day. What were the most important things? Baba did मूवी धोना और 8 बजे देखने को जाना। किधर? द्वारकाधी के जंगल की तरफ? नहीं, जंगल पूर्व बाजू गांव में। और एक कोपरे पर खड़े रहना और पुकारना, आए बहुत रोटी लाओ। कितना? 8 बजे को सुबह? 8 बजे सुबह नहीं, 8 बजे। 8 बजे जाते थे? अब कितना बजे तक लेते थे? हाँ, ये कोठी पर खड़े है ना, उनको मालूम लोग उनको दाना वो 8 बजे की वो खत्म करते थे क्या? हाँ। फिर कितने बजे को वापस आते थे? आधा तास में। अच्छा। लेंडी बाग कब जाते थे फिर खाना न्यारी करके जाते थे। खाना होके नहाने को जाते थे? अच्छा। So what Balaji Gurav is saying is that, and we have seen that, we have read it many ways. So Baba used to, you'll hear more, about this later in the interview. Baba gets up early in the morning, 5 a.m. And the very first thing he will do is he will go and sit right next to the dhuni. If you would have visited Dwarka Mai, अंदर द्वारका में के अगर गए हो तो धुनी के जस्ट आउटसाइड ना नीचे एक गोल्डन पादुका है। वो वही जगह है जहां बाबा एवरी डे इन द मॉर्निंग व्हेन ही गेट्स अप ही विल sit there right next to dhuni. और जब when he's sitting there, nobody can dare to get inside Dwarka Mai except for 2 people, and those 2 people were Abdul Baba and Madhav Fasle, right? यही 2 लोग थे जो वहां आके करते थे। अब्दुल बाबा सुबह आकर अपना सफाई सुई करना, and then there was another third fortunate person, Bhagoji Shinde, the leper devotee who will come there। और जब आपने सुना होगा कि बाबा ने हाथ देकर धुनी में अपना हाथ जलाए थे, तो उसका एक रूटीन बन गया था कि वो आकर बाबा की चिलम कर जलाता था और फिर बाबा को वो अपना बैंडेज करता था। और फिर उन्होंने बताया गुरव जी ने कि 8 बजे जो हमने सुना था दक्षिणा के जाते थे भिक्षा मांगने, वो 8 बजे जाते थे, राइट? और फिर करके 10 बजे लेंडी बाग जाना बाबा का रूटीन था। बाबा यूज्ड टू गो लेंडी बाग 2 times. You will hear from Gurav ji in the interview later that एक तो वो जाते थे 10 बजे और दूसरा जाते थे 2 बजे। And lot of mysterious things happened in Lendi Bagh. We'll hear more now.
ask him this question. Everybody could come freely into the mosque, or there was necessity to Baba to call them in, or anybody could come in. Baba konala nahi na? No, nothing. Everybody comes to in the mosque and meet to Baba. No objection was there by Baba. But ask him what was Baba's personality in treating with people? खास काय काम होतं? 12 बजेची आरती झाले त्यानंतर काय झोपून जात होतं? झोपत नाही दिवसभर. आरती होए बाद फिर कुछ गाने वाले आएंगे, कुछ ऐसा ऐसा शाम तक कार्यक्रम चलता था. In daytime, Baba was not at all taking sleep or rest. Means not at all taking sleep in daytime. And after noon arati, lot of devotees are coming to Baba meeting, and sometimes making bhajans, singing God's name, like kirtanas, like was going on. That's all. So Baba, he slept in the night. Huh? When Baba sleep. Acha, stop it. Nothing. बाबा रात्री संध्याकाळी काय काम नाही होतं ना? रात्री जेवण झाल्यावर जेवण किती वाजता? रात्री 8-9 वाजता. 8 वाजता जेवण करत होतो रात्री. और जेवण झाल्यावर मग थोडं बसायचं झोपायचं. कुठे झोपायचं होतं? द्वारका एक दिवस द्वारकामध्ये आणि एक दिवस चावडीने. Baba used to take his supper, means take his night food after 7 to 8 o'clock, after yes PM, and then one day he was taking his sleep at Dwarka Mai, that is called Masjid, and another day he used to go to Chavadi to take sleep. What time did he got up? सुबह किती वाजता उठत होतो? सकाळी किती वाजता उठत होतो? सकाळी 5 वाजता. 5 o'clock morning. 5 o'clock. Ask him if Sai Baba ever prayed or meditate. If he has ever seen Baba praying or meditate or in meditation. बाबा दिल्ली में जाते थे, दिल्ली बाग में जाते थे, वो 2 तास वहाँ कुछ भी करते थे, और आदमी कोई जाना नहीं वहाँ, व्यक्ति ऐसे. हाँ, वो 2 बजे कोई नहीं देखा. 2 बजे दोपहर को और 10 बजे. 10 बजे सुबह. हाँ, सुबह 10 बजे जाते. हाँ, 10 बजे और 2 बजे. 2 टाइम जाते थे लेंडी बाग को? कौन कौन जाते थे? व्यक्ति जाते थे, वो बाकी के लोग खड़े रहे ना. हाँ, बैठ तो जाते थे. हाँ, व्यक्ति अंदर व्यक्ति जाते थे, वहाँ व्यक्ति रहते. बाकी का आदमी हम बाहर खड़े रहे. After 10 o'clock, returning from village to Masjid, Baba used to go to Lendi Bagh and staying 1 to 1.5 hours there without anybody. Alone he was there. Praying or meditation. Yes. What he was doing, nobody seen by others. So, we have what subsequent, findings about what Baba used to do. What it has been put in the literature is that only one person was allowed to go with Baba. He will go to Lendi Bagh and he will stand behind the Nandadeep, right? And only one person is Abdul Baba. His routine was nobody else, like Gurav ji is mentioning, when he is going, everyone will stop and only Baba will move on to the Lendi Bagh. And then Abdul Baba, what he will do is he will bring bucket full of water and he will bring in front of the Baba. और जब जो लेंडी बाग जो नंदादीप है, जब आप नंदादीप अभी जाते हो तो when you do the production right behind Lendi Nandadeep, Baba will stand. He will take the water from the bucket and he will throw it in all the directions. And he will talk as if he's talking to some Divya Shakti in the sky in all the directions. This only Baba knows what he was doing. And this is exactly what he used to do even when he was
going from, like Guravji mentioned, one day he will sleep in Dwarkamai, another in Chavdi. When he's going from Dwarkamai to Chavdi, if you see, the distance is very small, right? You can, you can reach there in like 2 minutes. But it used to take a lot of time, because when Baba, right between Dwarkamai and Chavdi, there is a place where you can see the Maruti Mandir right there. Baba, when comes to that point, he will do the same thing what he used to do in Lendi Bagh, talking to like Divya Shakti, and he will stand there, right? And I think we have heard this in other episodes, that Baba, it's written in the Shripad Vallabh Charitra, that how Baba manifested as Dutt ji and Hanuman ji, how much. So that's what, what he was doing, why he was doing. But that's what it has been found, his observations in Lendi Bagh, and nobody was allowed to get in. So we'll move further. Ask him to tell us a story concerning Sai Baba, one that he thinks it's very interesting for knowing his personality. He has been 6 years, with Sai Baba. Tell us to what he would Done by Baba. Yes, anything that he would like to say. बाबा के चमत्कार बहुत देख बाबा ने one is for that well, pour the blood in well, and दूसरा हे बाबा के वो बोले तो मेरे को ना, बाबा के राम ने क्या सब बने थी, पानी नहीं था। दूसरा और एक हरिद्वार के महाराज करके इधर आए, तो उनके पास कुछ नहीं था, भगत कपनी एक आंख पर फड़कर ऐसा रात को मुकाम करा द्वारका में, फजर उठे तो उनको चाय की तरफ थी, तो उनके पास पैसे वैसे कुछ किसके पास मांगते नहीं थे, तो बाबा क्या रहे आंखें लगे बाबा की तरफ बैठ गए, बाबा मेरे को अभी चाह हो ना, अभी तुम देखो मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं, तुम्हारे को मालूम है। एक आदमी सगुन तरफ गया, सगुन महाराज फोटो लिखने वाला, उसको बोला ए सगुन मेरे को चाह करके जब मैं चाह बाबा को पेलो खिलाता हूँ, तो सगुन बोला अरे बाबा चाह पीते नहीं, बाबा चाह पीते नहीं। Baba was not at all taking tea. Sai Baba was not at all taking tea. तुझे तुमने चाह करके दिया, वो चाह मिला बाबा की तरफ गया, बाबा ये चाह दो, तो बाबा बोले अरे भाई चाह पीते नहीं, तेरे को मालूम है, वो सामने बैठा रहा उसको दे, उस ने ही महाराज, तो महाराज आंखें लगे बैठे थे, तो उन्होंने पुकारा महाराज महाराज, महाराज ने आके खोली क्या, बाबा ने तो मेरे को चाह दिया, फिर महाराज वो माधवराव करके ताड़ करो माधवराव। So this is another incident, Leela, where Baba knows what, when you go to Dwarkamai, he knows everything, what's going on in your mind. So there Guravji is talking about a Hardwar sannyasi who came, and he didn't have any money or nothing, and just a kafni, and he really had a desire to have a tea, and he said, and he, within himself, he said, Baba, I need a tea, and he sat there. And then you would have heard about Shagun Nayak, right? Shagun Nayak used to run a hotel during Baba's time, right? He has a small tea stall. He will provide food. Baba, he will actually give breakfast to Baba every morning. That was his routine. So, or also jo bhi devotees aate the, he will give them food, teas, and then later on he started selling Baba's books also. So in this Leela, Madhavrao Atkar, right, he went to Shagun Nayak and he asked, give me one cup of tea, I want to give it to Baba. So Shagun Nayak said, Baba to chai peete nahi hai. He said, no, give it to me. By the way, Baba, this has been verified by Shama also to Anna Sahib Gavankar in his book, that Shama also mentioned Baba never used to drink tea, but he was a coffee man. He used to drink coffee. In the last episode, I'm not sure we shared, but he shared with Swami Shannan and Swami Ji that, in under Dwarka Mai, there was a cave where he did, Upasana
Baba was there, and he said, I used to come out whenever there was some saint, and I used to drink coffee, and unki coffee ka bhi bada different tarika tha, but that's immaterial. So Madhav Rao Adkar, now Shagun Naik se leke, he went to Baba कि बाबा ये लो चाय लो. बाबा कहते तेरे को पता नहीं मैं चाय नहीं पीता. तो ऐसा कर, वो स्वामी जो सामने बैठा है, सन्यासी who's sitting opposite, go and give it to him. So that's what this is what Gurav ji is explaining what he witnessed thing. Now we will hear about a great Booty ji incident, right? What Gurav ji personally witnessed. अनुभव है बुट्टी को, ये रहने वाले नागपुर के नौकोट नारायण, अच्छा बड़ा श्रीमान, वो शेगांव में गया गजन मारे तरफ. तो गजन मारे बोले बाबा तू बड़ा घर का मेजबान है, तेरा मेरे से खाता नहीं, फिर बड़े घर के जाओ. तो हमारा बड़ा भाई शिरडी में जाओ, उधर जाओ. फिर वो शिरडी में आए. अब बड़ा श्रीमंत आदमी करिए 10-12 आदमी चाकर नौकर वहाँ रहे. तो इनको ज्योति जी जाना अच्छा था. ज्योति जी देखने में उनको ऐसा मिला कि कल अपना मृत्यु हो गए, कल अपन जाएंगे. तो घबरा गए. यहाँ के पटेल थे रामचंद्र ने इसको बुलाए, पटेल मेरा कल मृत्यु की क्या करना, हम तो घबरा गए, हमारा कोई नहीं. पटेल बोले तुम बाबा किधर आए, जैसे कुछ काम है बाबा सब निवारण करेंगे. So what he is saying is Booty ji, actually we all know Booty ji was associated with Gajanan Maharaj of Shekhar. So he was disciple of Gajanan Maharaj, but Gajanan Maharaj said, Booty ji, you are from a bigger house. Tumhara gharana bahut bada hai. So why don't you go to my elder brother Sai Baba in Shirdi, right? So that's how Booty ji came here. And then what Gurav ji is saying is that Booty ji came to know through Jyotish Vidya. He himself was a good in Jyotish Vidya, and he found out that tomorrow my it's gonna be my doomsday. I mean, he predicted that he's gonna die, right? So he was very upset, and then he went to Patil, and Patil said, why are you worried, right? You go to Baba and he will take care of that. So we'll move forward. पटेल बोले कि तुम बाबा के चौबे में बैठो, फजर स्नान करके बाबा के बैठो, तुम बाबा सब निवारण करेंगे. Mr. Patil told to Booty Sahib, go to Baba and sit there. Don't go here and there. Sit there with Baba. It will be all right. Come to all right. करके बाबा के बैठे पाव दबा के. अच्छा. तो 8 बजे थे, 8 बजे उनको लगा संडास बुट्टी को. अच्छा. तो फजर बाबा मेरे को संडास में अभी आता हूँ. तो बाबू ने अभी नहीं जाना, फिर जाना. उनको रोका. Next day morning 8 o'clock, Booty was pressing his what is called the ties in these legs to Baba. Yes. At the time he wanted to massaging the legs. Yes. Massaging. Yes. Pressing like this. What Booty told to Baba, I want to go to toilet. Yes. Booty told to Baba, let me go now. Then Baba told to Booty, not now. Should not go anywhere at this time. You can go afterwards. मैंने कितनी तास के नंतर वैसे कल भर के बैठे बूटी, और एक तास होगा उनको और संडस आई उनको. तो बाबा मेरे को अभी जोर से संडस आई, मैं अब भी संडस चाहता हूँ. बाबा बोले राजा अभी नहीं जाना, फिर जाना. और रोका उनको. 1 hour on the same day, after 1 hour, Booty told to Baba again, I wanted to go. For toilet. Baba again not to allowed to go anywhere. Not now. And then? फिर और यही रहे. अभी ऐसा करके 10:30 बज गए. फिर बाबा बोले तेरे को अभी संडे जाने, अभी जाओ. After 10:30, since morning 8 o'clock to 10:30, after 10:30, Baba allowed to go anywhere. I see. चले गई. संडस रही नहीं, संडस नहीं.
पर वो वैसे आए, घर को आए, चपरासी को बोले कि हमारे मेरे को चलने जाना है। वो बड़ा आदमी करके लोटा लेके आप चपरासी चलना, उन्हें नहीं पीछे जाना। जब संडस ऐसे नहीं थे, हदमर किए थे, तो चपरासी लोटा लेके संडस में रखने को लोटा गया तो बड़े से चिल्लाए, मालक बड़ा साफ। तो हम भी सामने से हम ही गए। हाँ। After 10:30, he went to toilet in grounds area. At that time was only grounds area was going to toilet. Then when one sevak also with booty. Baba told to Booty Sahib, nah, you don't go alone. You take your sevak also. Means chaprasi, that's bodyguard. Then with one lota of water, they went to ground. After they went there, Booty went some length, some distance ago. To the toilet. To the ground. The toilet means at that time there was only ground. Yes. Yes. Okay. Booty alone gone. Yes. Little bit length. Then afterwards he cried. Booty cried. Then Chaprasi went to, the bodyguard went near to Booty and saw the snake. There was one snake. अच्छा, हाँ, near Booty. पुकारा वो कि साफ करके हम भी भागे गए तो सांप 5 मिनट के अंदर ऊपर की क्या काट थी ऊपर सांप के ऊपर काट वो छोड़ के 5 मिनट के गया था। सांप गायब हो गए। नहीं, सांप गए तो वो ऊपर की काट छोड़ के गया था। बॉडी हाँ ऊपर रही ना वो छोड़ के गया तो 5 मिनट अंदर। तो हम भी गए, हमने देखी तो अरे आप भी गए? हम गए फिर देखने के वास्ते। साफ करके बोला वो मैं तो सांप चले गया था ऊपर के काट छोड़ के। अच्छा। तो हमने वो काट निकाले, इतने बड़ी काट। फिर बूटी बोले कि मेरा प्राण बाबा ने बचाया, बाबा ने मेरे को नहीं रोका होता तो हम चले गए थे। फिर क्या करना, अभी सब तुम मेरे को बोलता। तुम्ही स्वतः गेलेला आहे? हाँ मी स्वतः पाहिलेला आहे? मी स्वतः काट काढली। So I just want to, Ashutosh ji, you should explain, but what I want, we missed one English translation here. What happened was you all heard that there was a snake there, and snake, sheds their skin once in 6 months somewhere. So that's what that snake was doing. And that's what Baba prevented Booty ji from going for toilet, right? And then when he went, so Gurav ji said, I also went there to see what happened, what snake, and then he found that skin from the snake. So Dr. Ashutosh, what do you see? Yeah. First of all, I would like to just say that the Booty initially was devoted to Gajanan Maharaj, and everybody must be knowing about the Gajanan Maharaj. He was one of the greatest sant in Maharashtra. He was considered as the Shiva अवतार, भगवान शंकर के अवतार के रूप में जाने जाते थे। और जैसे शिरडी साईनाथ का अवतरण हुआ, इनके जन्म के बारे में कुछ पता नहीं है। इन द सिमिलर फैशन गजानन महाराज के भी जन्म के बारे में कुछ पता आता नहीं है। ये 1878 में शेगांव में अवतरित हुए, प्रकट हुए। उनको हम लोग जो प्राकट्य दिवस के रूप में मनाते हैं। कई लीलाएं गजानन स्वामी ने, चूंकि ईश्वरीय अवतार थे तो कई लीलाएं इन्होंने की जिससे लोगों को इनके ऊपर भी विश्वास जमे। और एक खास चीज नोट करिएगा कि जब गजानन महाराज समाधिस्थ हो रहे थे उसी समय ये अक्कलकोट स्वामी जब समाधिस्थ हो रहे थे उसी समय गजानन महाराज का प्रकट होना होता है। तो ये एक सीरीज था, एक चला आ रहा था कि इनके अक्कलकोट स्वामी के बाद गजानन महाराज आए और उन्होंने चार्ज लिया महाराज की महाराष्ट्र की जो स्पिरिचुअल ग्रोथ थी उसके लिए। सो इनकी वजह से कई बार एक कुएं में पानी आया, इनकी कई लीलाएं हैं। सो बूटी जी को जब ये बात पता चली थी कि बूटी जी, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि बूटी जी केम टू नो विथ हिज ओन पावर कि कल मेरी जो उनको एस्ट्रोलॉजी आती थी कि टुमारो आई विल डाई, मेरे लिए कल लास्ट डे होगा। तो बहुत परेशान थे। गजानन महाराज ने उनको शिरडी भेजा कि मेरे बड़े भाई के पास जाओ, शिरडी में पाटिल जिससे मुलाकात होती है, ये सब गुरु जी ने बताया।
कि पाटिल जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा बाबा के पास जाकर बैठो, बाबा के शरण में रहो। और तब उन्होंने बाबा का शरण लिया, और जैसे ही बाबा के चरण वंदना की, साईं ने उनसे कहा कि तुम ज्योतिषियों ने बोल दिया है कि कल तुम्हारा लास्ट डे है, मैं देखता हूं काल तुम्हारा हरण कैसे करता है, कैसे कौन तुम्हें मारता है। अभी जस्ट पुनीत जी ने एक चीज बोला ना कि द स्नेक सेट्स इट्स स्किन एवरी 6 months। सी द लीला बाबा एंड कॉन्सिडेंस व्हाई। जब ये बूटी जी बाबा के पास बैठे थे, व्हाट गुरव जी वाज नरेटिंग, कि उनको बाबा इवन टॉयलेट आने के बाद इन दोज डेज देयर वाज ओपन डिफिकेशन। सो इन दोज डेज भी जब ऐसा था तो बाबा उनको अपने पास बिठा के रखे थे। नेचुरल काल जब आती है तो बड़ा प्रेशर होता है, पर इंस्पाइट ऑफ ऑल बाबा ने उनको जाने नहीं दिया, क्योंकि उससे बड़ी काल उधर थी और उसको दूर करना था। सी द टाइम व्हेन बाबा सेंड हिम, जब ये ओपन डेफिकेशन के लिए अपने सर्वेंट के साथ जाते हैं, एट दैट टाइम द स्नेक वाज शेडिंग इट्स ओन स्किन। एंड जब स्नेक अपनी स्किन छोड़ता है तो उसकी आंखों के ऊपर से वो स्किन निकलती है, जिससे वो उस समय कुछ देख नहीं पाता। देखो यूं तो गांव में तो ऐसी कहा जाता है कि उस समय सांप अंधा हो जाता है। अंधा नहीं होता, स्किन उसके ऊपर बंद कर लेती है आई को। सो दैट वाज द पीरियड जब उस स्नेक ने बूटी साहब को देखा ही नहीं, और नौकर ने और बूटी साहब ने देख लिया, और स्नेक जब तक अपना काम करके वो निकल लिए, वहां से हट लिए, जब सतर्क हो गए, तब स्नेक अपना इधर उधर निकलते हुए भाग लिया। तो दिस वाज द हेल्प फ्रॉम बाबा। देखिए कैसे समय, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कितने समर्थ सदगुरु हैं कि ही वाज नोइंग कि इस विपत्ति से इनको कैसे बचाया जाए। व्हाट वाज द टाइम जब स्नेक अपना स्किन सेट करेगा, और उसी स्किन छोड़ते समय में इनको वहां पे भेजा कि तुम चले जाओ, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इतने देर के लिए वो देख नहीं पाएगा। सो दिस वाज, और नॉट ओनली दिस बूटी साहब, बाबा ने तो सांप से, आप बाला साहब मिरकर जी को जानते होंगे, बाला साहब मिरकर जी को भी बाबा ने ऐसे ही बताया। बाला साहब मिरकर के लिए तो बाबा ने यहाँ तक कहा कि जो बच्चा द्वारिका माई की गोद में बैठता है, दुनिया उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। और सिमिलरली बाबा ने तो उनसे ये भी कहा कि देखो, ये तुम बड़े बाबा को जानते हो क्या, मतलब सांप को जानते हो? उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं बोला। चितली जा रहे थे, चितली जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनके बिस्तर पे, उनके कमर के ऊपर एक सांप लेटते हुए चलते हुए आया। सो बाबा ने वहां भी बचाया लोग उनको। सो सच्चिदानंद साईनाथ इवन अमीर शक्कर जी को सांप से बचाया, सांप काटने से, स्नेक बाइट से। जब अमीर शक्कर जी सो रहे थे, तब बाबा ने कहा, वो अब्दुल जरा लालटेन लेके आना, इधर देख तो कोई दुष्ट मेरे बिस्तर पे चढ़ रहा है। और वो बाबा के बिस्तर पे कोई नहीं चढ़ रहा था, लेकिन अमीर शक्कर चूंकि बाबा के साथ रहते थे, इसलिए उनको ये ज्ञात हो गया था कि बाबा की मूल बातों का अर्थ क्या है। तो अमीर शक्कर ने अपना बिस्तर चेक किया और उनके बिस्तर पे सांप। राइट, तो ऐसे वेरी नाइस। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सबकी रक्षा करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसी से आपका हमारा विश्वास बाबा के अंदर बढ़ता चला जाता है। Right. So now we will move on to, there was a conversation with Gurav ji about Baba's Mahasamadhi. तो मैं तो बड़ा आदमी, क्या करना? तो उन्होंने वो ये मंदिर बनाया लेफ्टे ने। तो जब आदमी को 4 आना रोज था और बाई को 2 आना रोज, उस वक्त गौंडी को 12 आना, सुतार को 12 आना, अब मैं स्टोर कीपर था, मैंने को 12 रुपए में था, तो भी 1.25 लाख रुपए खर्चे होगा उस वक्त। Then Booty told to everybody of villagers, and I escaped my life by Baba. So I wanted to make a vada here. I got some money, so I wanted to make a vada. Then he accepted to and agreed with Baba. This is the point of Booty. And what he is saying is there, then, Gurav ji is mentioning how much Dakshina Baba used to go every day to everyone, right? It was in annas and small. This costed actually 1,25,000 rupees, Indian rupees, during that time when Dakshina was given. So it's really a huge amount thing. So we'll continue further. Ask him about the animals, if it's true that. Samadhi, Dwarka Mai Madhi,
द्वारकामाई मस्जिद होतो ना त्यावेळी. अच्छा, ते द्वारकामाई म्हणून नाव ठेवले. द्वारका बाबांनी नाव ठेवले. अच्छा. At that time, the Dwarkamai was called Masjid. After that, Baba changed the name as Dwarkamai. अच्छा, तिकडे काहीतरी वो कुत्रे वगैरे नाही तर दुसरं काहीतरी आता होतं. बाबा खजावर बसले का कुत्ते जो बहनो बाबा के चाट में मुंह डालने तो बाबा बोले नहीं, हाकलने नहीं उसको. When taking food by Baba, yes, when taking afternoon arti, when taking food by Baba, so many means dogs, cats and crows and this one coming and taking, but Baba lovingly calling them. He loved animals. Yes, loved animals and lovingly calling them, "Cow, take food." Means something throwing like this. Ask him if Baba sang a song when he gave Udi. I know he sang a little song, Ram Ram Aoji Aoji, something like that. बाबा जब ऊटी देते थे ना तभी कुछ बोलत होतो. अल्लाह ऐसे करेंगे. ऐसे काय बाबा ने ऊटी देना, अपने भक्त लोगों ने ऊटी देना, बाबा के हाथ पर रखना इसे. अच्छा. बाबा ने फिर अपने हाथ में देना और बाबा ने अपने हाथ से हाथ में बुलाना. पहले बाबा के हाथ में देने का. अपन ऊटी देना धुनी से. हाँ, धुनी अपन ने ऊटी देना बाबा के हाथ में देना. अच्छा. बाबा फिर से अपने हाथ में दे के कपड़ को लगाना, मस्तक पर हाथ रखना. ऐसी बाबा की. If anybody likes to take Udi, that from Dhuni's ash, so first taking by devotees this Udi from Dhuni, that ash, then giving to Baba's hands, and then again Baba returning the same Udi to the devotees to who the man gives, the same man. So to be blessed. To be blessed by handing like this, and putting some Udi and some Udi with hand in the hand. Ask him what is the power of Udi. Udi की क्या एक शक्ति क्या है Udi का लाइट के. मुझे शक्ति सब तरह कुछ दुखना भिकना कुछ आए तो कुछ संकट आए तो मुझे बाबा देते थे. अपन नहीं जाना. Any trouble, if anybody, whoever it may be, if anybody got any trouble, physical and even mental, or legs pain or body pain or stomach pains or fever, whatever it is, they comes to Baba and telling to Baba. Baba used to give this Udi, and after taking this Udi with inside and putting forehead, he automatically comes to cure. Question. Ask him what was the first reaction when Baba took Samadhi of the हमारे सामने वो बाबा गए. अच्छा. He was standing outside near that near sitting bench. You have seen, no? That's Gadi. Near. बाबा ने इनके ऊपर ये छोड़ा. ये बैजू पटेल कोते. कौन है? बैजू पटेल कोते. अच्छा. हाँ, उन्होंने बाबा को ऐसे दिया चोट के वक्त, इनके आंखों को दिया छूटा और इतने लोग हम सामने थे. अच्छा. हाँ. So here Guravji is mentioning about Baba's, when Baba left his mortal coil, he was present there, right? I mean, I didn't find anywhere in literature. So here we are finding for the first time, Guravji is saying that he was actually present there. And we all know this thing that Baba was, left him. Actually, I can just visualize, Dr. Antonio, you can chime on this, but I'm visualizing that Baba left his face by the heart of Baija Appa Kote. Baija Appa Kote jo the, he was there when he gave him the water, right? Yeah. So we'll continue. Exactly. Yeah. Okay. ये इतने सामने थे. हम तो हो गए ना बाकी सब लोग आ गए. हाँ, 5 मिनट में सब भर गए. तो कैसे कळले ते लोक कळले कैसे बातमी पसर गई ना. कोण जाऊन सांगितले? तो गाड़ी में जाके लोगों ने बोलो काका से को बोला वगैरह
की बाबा गए कोण गेले तुम्ही गेले या दुसरं नाही कोणी कोण कोणतेच गेला वो मालूम नाही कोई कोई तुम्ही नाही गेले नहीं मैं नहीं गेला हाँ कोई तरी गेले बात नहीं somebody Wait a moment. some another people were also there at that time outside. Then they ran away to village and told to everybody and खाना खाते थे वो लोग खाना वैसे अच्छा at the time they were taking their foods. I mean villagers They were and eating. Dixit Vada, yes they were eating and they left eating and come to see their Baba. At Dwarkamai. Yes, at Dwarkamai. And everybody was crying. Eh? Right. आज आल्यानंतर सगळे जण हे करायला थोड़ा हिंदू मुसलमान का तंत्र पड़ा मुसलमान बोले द्वारका में then each and everybody come to know Baba has gone. So Mohammedans and Hindus gathered there. बोले बाबा मेरे इधर आने को ना बाड़ी में नहीं तो मैं प्राण दूंगा बूटी बोले फिर सब लोगों ने करके फिर काका साहब दीक्षित ने कंडक्टर उतार किया कंडक्टर अहमदनगर So here Gurav ji is saying कि when this all happened, Booty ji really said that if Baba, you don't come to Vada and stay there after he left his mortal coil, you have to come here and stay. Otherwise, I will also come to you. And then Dikshit ji was there. We all know they called that's what Gurav ji is saying, that they called the collector from Nagar. कंडक्टर बोले देखो बोल के जिसका बहुमत हो जाएगा अच्छा अच्छा उसका हम अच्छा So collector said that whoever, it's because there was a dispute between how to do the last rites of Baba. So the collector said whoever has the majority, for how you want to do, that's how we will proceed. Ask him if he ever heard the Sai Baba sing Kirtan. ना बाबा स्वतः गातात होतो गावात होतो भजन विजन करत होतो बाबा स्वतः कभी कभी yes very little that is. So Baba actually used to sing, but in when he was alone. Actually, once when, if you remember, Nana Sahib Chandrokar got transferred to Pandharpur. And Baba always knows, right, that when things happen. So he was coming to Shirdi to take Baba's blessing before he joins office in Pandharpur. And, that is one of the instances where Baba's, he was sitting in Dwarkamai and he said to everyone, let's sing the bhajan, ki doors of Pandharpur are open. So he started singing. And there are many other incidents, when he was with the kids in Chavdi, he was playing, he will, sing. And his favorite bhajan, we all know what was it was, Das Ganu's Sai Ram Nazar Karna. Ask him about if Sai Baba ever asked him Dakshina. If he ever asked him. दक्षिणा to these people. आपको दक्षिणा दक्षिणा जब भी मांगे थे देते थे आपको नहीं मारने के नहीं मुझे आप देते थे कभी कभी हम मेरे को Baba himself was giving some dakshina to this Pilaji Gurav. Baba was giving. Yes, Baba himself giving. Daily to honors. अच्छा Daily to honors. Daily Pilaji Gurav was getting 2 honors daily. That is. Can you ask him if he knows something about Upasani? If he knows something about Upasani Maharaj? हम एक ही साल में आया है जो साल में उपस्थित महाराज आए वो साल में आए इधर आए एक ही साल में उपस्थित महाराज नहीं था आया था ना हाँ ऐसे वही टाइम में उपस्थित महाराज आए क्या वो कौन सा साल में 1912 साल में at the year of 1912 when the Pilaji Gurav's family comes to Shirdi,
in 1912. 1912. Upasani Maharaj also came here The same in year. the same year I see, the same time. to Shirdi. And what happened? अच्छा, उसके बाद उपासनी महाराज का और बाबा का कैसा संबंध हो गया? तुम अपन भक्त है ऐसे बात थे. Upasani Maharaj was also one of the devotee of Baba, like Pilaji, Gurav, Shamaji, like that. फिर बाबा ने उनको हकल दिया यहाँ से. अकल जी के भेजा है. नहीं मुझे वो ऐसा होगा कि काका साहब दीक्षित थे तो आज दिन को खाना खा रहे थे 3 दिन खाना खा रहे थे प्रत्येक भक्तों को फुकट 3 दिन काका साहब. हाँ तो ये वो देख रही कुछ श्यामा तरफ. अच्छा. माधवराव. तो ये उपासनी महाराज यहाँ 6 महीने रहा वो. अच्छा. तो काका साहब आए तो काका साहब 2-3 वक्त आके कहे तो उनको दिखाओ कि हमें से कैसे खाता है. फिर काका साहब दीक्षित बोले माधवराव को, माधवराव अपना क्या रे नियम है रूल है कि एक आदमी को 3 दिन डालना. ये 6 महीने हो गया तुम ऐसे कैसे जीते नहीं. फिर माधवराव को गुस्सा आया. आरती हुई बाबा की. उपासनी महाराज आए. उपासनी महाराज आए और दररोज श्री का पाठ पर बैठे. तो महादेव ने उसको खाने के वो होना जो खाने खेले क्या उधर बोले तो बोले तेरे को लाज वाटते नहीं तू भी तो बस तो म्हणे तो काका साहेब आम्हाला रागे भरते. हाँ तुम्ही खुशाल येतात बसता. तो फिर उपासनी महाराज ने वो ताक वैसा छोड़ दिया, नमस्कार किया और बाबा के पास आके बैठे द्वारका में. So we have, we have gone through this in the episode of Upasani Maharaj, that he came around about the same time when Gurav ji came, around 1911, 1912, right? So, and let's remember one thing, when Dr. Antonio and Swami Shekhar Rao is taking this interview, Gurav ji is 90 years old. And all this stuff that he's repeating about is that happened right 70 years back, right? So, let's not get into all the dates, and anyway, that's irrelevant. So what happened to Upasani Maharaj? We know that Kaka Sahib Dikshit in Dikshitwala, Dikshit ji, Kaka Sahib Dikshit used to offer food to all the devotees, and it was free of cost. And Shama was the caretaker for making sure arrangement for the food. So this is an incident that Upasani Maharaj ji have been taking food there for 6 months. So Dikshit ji said, this is the rule, Shama, why is this happening? So Shama was upset also with Upasani Maharaj, and he said Dikshit ji is a great Baba's devotee. So why is this happening? So Upasani Maharaj, if you remember, when we covered this episode on Upasani Maharaj, we did not know this information, but we only knew that Upasani Maharaj one day left the food, meaning here also, when this thing happened, he did namaskar to the khana, Annapurna, and then he left from there, and he never came to Dikshitwala for the food. And from there, he went to Dwarkamai. Now we will hear what happened when he went to Dwarkamai, telling Baba about all this stuff. अरे घरचं कशाला बायकासारखा त्या खंडोबाजवळ जाऊन बैस तुला 4 वर्षांनी देव म्हणते लोक पाय पडते तू खंडोबा जेवण जाओ. खंडोबा देवळ इधर है ना खंडोबा. अच्छा. हो 4 बरस तुम हो बैठ ना तुम्हारे को परमेश्वर करके लोग तुम्हारे पाव पड़ेंगे. Then Baba told, don't worry about it. Why they are not ready to give the food for Upasani Maharaj. From that day, Baba told to Upasani Maharaj, go to Khandoba temple and have a seat there. Then, after some years, that is 2 to 3 years, after 2 to 3 years, you'll like me. Just like Sai Baba told to Upasani Maharaj, you will also come like me. And about the food, how could he manage with the food? अच्छा, फिर वो खंडोबा मंदिर में आने के बाद कौन? तो फिर उन्होंने फेटा मांगे, फेटा छोड़ दिया.
कुर्ता फेंक दिया और धोतर फेंक दिया, तरक फेंकते थे क्या? हाँ तरक फेंक दिया, तरक अभी वो पोते करने लगे। तो जरा उनकी तरफ से कुछ बाय वगैरह जाने लगे वहाँ वो देवल में। तो इनकी यहाँ लोग जरा नाराज हो गए, फिर उसको बोले कि तुम यहाँ देवल में नहीं रहने, तुम बाय तुम यहाँ रहते, तो फिर वो गांव के लोगों ने उसको हकल दिया। So we also know that when Baba said, okay, actually what Baba said when Upasani Maharaj went to Baba telling about this thing ki Dikshit ji or Shama ji aise kiya, so Baba said, why are you crying like a girl? That's what actually he said. If you translate Gurav ji's thing, go to Khandoba Mandir. And then we all know that Upasani Maharaj ji was another divine soul, okay, around Baba. Baba was definitely Par Brahma, but he was surrounded by divine souls like Radha Krishna Mai and many others, and Upasani Maharaj was one. So he was also, he led a life of Digambara. He went to Khandoba Mandir and he left, took out his Petha, Kafni and Digambara, but which was objectionable by the surrounding villagers. खंडोबा मंदिर के बाद दूसरा कौन तो आके खाना देते थे ना, उसको खाना देते थे ना उनको, तो कौन लेके जाते थे? There is two ladies were there at this in Shirdi village, Sharda Bai and Durga Bai. They were give the food to Upasani Baba. So these two ladies in the Khandoba temple were feeding Upasani Maharaj. The names? Sharda Bai and Durga Bai. So that concludes this whole audio interview. Very, very interesting. But I want to touch upon one thing. We should not, like this whole incident of Dikshit ji telling to Shama about the rule, and then Upasani Maharaj getting not eating food, going to Baba. We should not read it too much into this ki that somebody refused food, it wasn't good, we should have given food. But these are the situations that are created by Baba for him, Upasani Maharaj, to go to Khandoba Mandir and attain what he did actually in his life, right? It is not Baba only create all this situation. It is not, Baba doesn't want anyone to go away from him. It is the same thing. Sathe ji, right? Sathe, जिन्होंने साथे वाड़ा बनाया था. Baba was very close to Sathe ji, very, very close to Sathe ji. But Sathe ji, there is no person, no other devotee I have personally heard who actually left on his own from Shirdi and never came back. Rather, it was the other way. Baba will tell devotees, you go away, you don't need to come here. For example, Adkar ji, right? He told Adkar, you go spend time with your family. Mankar ji said, Machindargarh jao. But Sathe ji, on his own, he was a very big guy, reputed deputy collector at that level, right? He left on his own, and Baba, there was a reason, and I'm sure Baba had reasons. And actually, what we are told, what we have read is that villagers were jealous of Sathe ji. So once she was walking in the procession with Baba in front of Dwarkamai, and Nana Vali hit him with the glass and all that stuff. So after that he said, I will leave, I will not come back, because it's really scary. But the thing is, it should not that we should not read that Baba did not want Sathe ji, or Baba did not want Dikshit, Dikshit ji did not want to feed Upasana. That's not, it is all the divine play that Baba created, jo racha, ki taki hum sabko, we all should get our ultimate goal. So that concludes this audio interview. Very, very beautiful thing. First time we heard the voice of a Sai devotee. Whole credit goes to Dr. Antonio. And Dr. Antonio, I have one question, last question to you out of curiosity. What inspired you to release this after 25 years? What inspired me, I thought I had a debt
of gratitude toward all Sai Bhaktas. And I thought it would have been a sin for me to don't publish these audio recordings. And I thought that it was my duty, my dharma, to spread these audio recordings and prepare the book I prepared, and to do it for free, so that all Sai Bhaktas could hear these voices and these stories. And so this is what moved me to do this. And after so many years, with Baba's blessings, it was possible to do it with all the new technologies, so that these audios can be heard throughout the whole world. And if I had done this even 20 years ago, this could have not been possible. So all these audios are open access, and even the book is open access, and you can access it for free from the whole world, from all over the world. So I'm very pleased, and of course it's all Sai's grace, and I just hope I could have been an instrument for doing this. Absolutely. And why I asked you this question is because Dr. Antonio, by the way, has done a lot of work on Datta Guruji also, Dattaji also, because Shripad Vallabh Charitra, right? If I remember, that was also printed in Germany, and it manifested in the 90s. It was written way, way back. So, I mean, you're right. It's all Baba's divine Leelas that it is manifesting, because we are all, we are trying our best to get information about Baba, each and everything. And I think this is a great resource. By the way, all devotees, this is just the starting. We have a lot of, Dr. Antonio spent, I think, 15-20 days, right, in India, in Yeah, Shirdi, right? And right. There are a lot of devotees interviews that we will try to cover, because there's a lot of legwork that goes into creating this. So with that, I think we will conclude our session today. We will not play Baba's Aarti, because I think the team has created one video for you that actually summarizes what we all heard today from Balaji Guruji. So the first thing I'm gonna do is, sorry, apology for the guys folks on the YouTube, because it will get recorded there, and it won't get uploaded. So I'm gonna stop the streaming. We need to show that coins and langos. हाँ, sorry. हाँ, Kaki, Kaki दिखाओगे langot और coins? हाँ, बालिका, वो लंगोट और कॉइन्स दिखाओ. अनम्यूट करो अपने आप को. Okay. Great. This is the same langot that Balaji Gurav has been talking of. और आपके पास कॉइन भी है? Yes. बालाजी गुरव को बाबा 2 आना दक्षिणा देते थे रोज. खाली पढ़ छापो जाने बाड़ी बैठा मारे इसे छू मार मोटा है तो ना बोला ना. Okay, wow. Great. Thanks. Thank you. Great, excellent. Thank you. So now I'm gonna stop this thing stream first of all. Okay, I ended.